बहुत स्वागत करते हैं। आप सबसे पुनः अनुरोध है, हम जब मिनट टू मिनट जो फ्लो बनाया है उस हिसाब से चलेंगे तो 2 दिन का ये ट्रेनिंग कम वर्कशॉप मीनिंगफुल रहेगा। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपनी जगह ले लें। आइए शुरू करते हैं। हमारे बीच टेक्निकल सेशन के एज अ मॉडरेटर नेहा ब्यादवाल IAS असिस्टेंट कलेक्टर भरूच से हमारे बीच उपलब्ध है। बहुत तालियों के साथ वेलकम करते हैं और ओवर टू यू मैम। Good morning to all respected officers, colleagues, and participants. I am Neha Byadwal, IS Probationer of 2024 batch. I have the honor of moderating today's technical session on the overview of the NAKSHA Programme. It gives me great pleasure to introduce our distinguished resource person for this session, Shri Shyam Kumar Sir, Director, Department of Land Resources, Ministry of Rural Development, Government of India. Shyam Kumar Sir is a 2007 batch officer of Indian Defence Account Service and brings with him rich and diverse administrative experience across defence, finance, international assignments, and land governance. In his current role, Sir has played a key role in the implementation of major digital land governance initiatives such as Bhu-Aadhaar, Revenue Court Case Management System, and is presently spearheading the NAKSHA pilot project, which leverages GIS-based urban land surveys to bring transparency, accuracy, and efficiency to urban land records. We are privileged to learn directly from his experience and insights on this important national program, which has significant implications for urban planning, land administration, and governance at the field level. Sir, we are grateful for your time and guidance. I kindly request you to take the dais. Good morning, everyone. First of all, hearty welcome on the behalf of Department of Land Resources and LBSNA. And in this first technical session, I would like to just apprise you that Department of Land Resources had planned for the central training program across the, all the states participating in the NAKSHA program. And this is the last training program which we are conducting here for the most of the southern states and some of the states who left out during the training program stages. So after this, all the training programs will be conducted, or in most of the states it has been conducted, and the training will be at the state level only. So I hope this training program, the 2 days, will be very helpful to you and take as much as benefit you can take and for the implementation of this NAKSHA program. So before commencing the formal presentation, just I would like to know about how many of you are aware about NAKSHA. If you could just raise your hand, the participants particularly. So not much, but some of the participants, I guess, they are not aware about the NAKSHA program. So I will just give you an overview of the NAKSHA program. What is the NAKSHA program, how it was envisaged, why it was required, and how it is being implemented. So it's just an overview, and detail of the different components of the NAKSHA program will be explained in the subsequent technical session. That would be taken by the Survey of India and the stakeholders, MPSC, DC, different states who have already started their ground truthing. They will share their experiences. So I would like to just come on the presentation portion.
So this is the just an overview of NAKSHA program as such. NAKSHA is not in the just literal term, which is meaning of the map. It is a map which includes the spatial data as well as textual data, different use of different modern technologies, and which lead to the accurate and a robust system of the land management, particularly in the urban land management system. So NAKSHA generally stands for National Knowledge of the Geospatial Knowledge-Based Survey of the Urban Habitations. And this program was brought particularly for the urban land creation of the urban land management system. This program initially envisaged in view of that since we have work in the rural area, most of the states, they have completed the the rural land management portion, the different components of the land management and under the program DILRMP, Digital India Land Records Management Program. So under this program, all the rural land records, either they have computerized the the cadastral map, they are computerized now. The RORs that has been now been computerized, at least around 99% plus portion of RORs are computerized. So since we have moved very ahead in the rural area, now we plan to focus in the urban area, which lacks the appropriate land records data and the in fact the different components which requires for the future planning, and that's why Government of India planned for the implementation of this NAKSHA program. So this is a pilot program. Initially we thought, in fact, going for a direct implementation of the national program, we should take the at least one experience as pilot, which would help us in the implementation of the main program. And that's why we selected some of the ULBs from different states and the UTs. And in fact, we selected the cities not bigger in size and in the population also. We selected only the 35 square kilometer of the area of ULBs, and the population of which ULB are below 2 lakhs. So it would be easy to do the survey in those areas, and subsequently we will roll out it as a national program. And this program now just encompasses only 157 ULBs. I will come to the details of that in subsequent slides. And this is 1 year pilot program. And the idea behind this program, I just explained you. And the key metrics regarding this thing is that we have planned for around expenditure of 194 crores, and this implementation will have the different stakeholders, mainly where it will be implemented, the states and UTs and respective ULBs where this program will be implemented. And apart from that, Survey of India and MPSCDC, different COEs, these are our stakeholders who are helping us in implementation of this pilot program. After successful completion of this pilot program, we plan to implement in all the 4,912 ULBs across the India.
But of course, it would be very, very difficult to implement in entire ULBs across India. So at first phase, we plan to take around 1,000 of the ULBs and in the first phase of the main program implementation. And after that, we will come for the rest of the ULBs. So this program was implemented, just inaugurated, from center, from Raisen, Madhya Pradesh, and our Honorable Minister, Shri Shivraj Singh Chauhan ji, has inaugurated this program in February 2025. And these are just a glimpse of inauguration. So now we will come to why this NAKSHA program was required. Everybody was, asking regarding this program. Everybody is happy, in the cities, particularly the ULBs. They have they do the registration and they have their ownership based on their all the documents which they are having right now. So everybody is happy, and just introduction of this survey and resurvey program, definitely it will create some of the issues and problems. So everybody was apprehensive that why this program is required at national level. So the backdrop of this program was since there is lack of different land management system or the land records in the urban areas. Because in urban areas particularly what happens, you might be aware, whenever one area comes under the municipal portion, so revenue department just hand over the land records to the urban development department or the municipal corporation, and after that no upgradation, no updation happens in those records, and that creates the unmanaged form of the land records. And there are many stakeholders and different organizations who are handling the land records, particularly in the urban areas, like urban development department or the settlement department or the municipal corporation itself. So these are the issues which makes it very difficult to manage and have the uniform type of land records, and that's why there is no good land records available in respect of the urban areas, except some of the state like Gujarat is itself has worked way back in the urban land records. Tamil Nadu, Goa, Maharashtra, they have worked something in this area, but still they are lacking in the robust urban land record system. Then the next issue was that the kind of the urban settlement is changing due to the increase in the urban population. It is expected that by the 2031 we will have the 60 crores of the population in the urban areas, and to manage all the resources in urban areas, there is requirement of the a robust system of the land management, and that's why this NAKSHA program was envisaged. As you know, land is a very expensive, and this type of commodity is a very restricted type of commodity, and that's why the optimal utilization of this resource is very required. And since the increase of the population is there,
and the resource is limited, there was, increase in the encroachment. There was increase in the use of land which was not supposed to be, the unauthorized use of the land. And apart from those, various disputes and legal cases, it is, increasing day by day. And as you might be aware that around 1/3 of the legal cases, particularly in the lower courts, they pertain to the land and the property. So it was very much required to have a clear and correct data of the land and property in urban areas, and that's why this program was envisaged. Apart from this, the infrastructure development, that also needs a robust land record system. And since for the land acquisition activity, we need to have the correct data, accurate data, which can be used for the land acquisition. And that's why it is important to create a system or management for the land, and that would help in the infrastructure development in the country. Apart from that, I would like to emphasize that since there is no uniformity in the maintenance of the land records, particularly in the urban areas, there was felt the requirement of the some kind of uniformity should be there. And that's why in the NAKSHA program, we try to capture the data in form of, where the uniformity can be maintained, either the spatial data or the textual data. All those data can be brought at the platform from which the the uniformity can be maintained. As you might be aware about the the land administration domain model, LADM, we are moving towards that also. And for that, the standard of the data which needs to be maintained at the state level or the central level, and for that this NAKSHA program will definitely help. Apart from that, the business ready, that is erstwhile the ease of doing business, where the global ranking is being provided to the different country, that how much the country is ready for the investment at the global level, and according to that the ranking is being provided. As of now, the till last 2024, India was around at the level of 62 rank in the ease of doing business, which includes the land and property factor also. Now this ease of doing business has been changed into the business ready, be ready format, and that is being conducted by the World Bank. And for that also, we need to have the robust system of the land records, and those data can be interoperable and ready to use by any stakeholder. As in the last few years, we have done in the gathering of the data or the collection of the data at the 𝗤𝗏𝗄𝗏 portal for the use of infrastructure development and other activities. So these were the compelling issues and the factors which due to which we envisage and we are implementing this NAKSHA program. So
So now, since most of you are either from the municipal corporation, urban local bodies, and the urban local bodies, which comes under some of the district collectors are also here. So how this NAKSHA program will have the potential to change the urban governance or the municipal governance. This part I would like to just bring out into your notice. So till now, it is seen that in the urban area, the property taxation portion is one of the major source of income of the municipal corporation or the urban local bodies. And this part is being greatly affected by the implementation of this NAKSHA program. If you will have the robust GIS data, if you will have the accurate land parcel and property data, definitely you will yield the high income of the property taxation. So for the property taxation, either you might be following the capital value system or the annual revenue value-based system or the self-assessment based system. Any of the taxation system that requires a perfect and the robust area data, and definitely this data can be captured through the NAKSHA, and this would help in the finalization of the property taxation, which is the major source of the ULBs. But still, we are lacking somewhere in this property taxation portion. As you might be aware about that in the developed country, in the OECD countries, the property taxation comprise around 2% of the GDP. The total percentage of the income of the property taxation. But in India, we are still at the 0.2% of the GDP. So to increase this portion, definitely we would require a system which will help us in the increase of the property taxation. The representative from the Karnataka, they must vouch for this, that after getting the GIS data and the resurvey program, like for the Bengaluru, they have completed the urban survey with the help of drone and in fact the ground truthing, door-to-door ground truthing, and after that the self-assessment system, SAS system they adopted, and they got the increase in the property taxation. This is now till 23-24, it's whooping 3,900 crores of the data, which was around 712 crores only a decade before. And this is the example, this is the latest example, which ensures that if you have the robust data regarding the taxation, regarding the land and property, you will have increased the taxation data. So this NAKSHA can help you, the subjective assessment, eliminating the subjective assessment of the, the property taxation. It will help you in the planning of, requirement-based planning in the city or the ULBs. Different data you will be having which can be used for the different use of the
municipal corporation and ULBs. In fact, you can plan the disaster management system also. If you will have, like in this NAKSHA program, we are capturing the DEM, DSM, DTM, digital elevation model, surface model, and the terrain model, which will help you to assess the disaster. Like in city, you can see or you can plan that in which area the first if water logging is happening or flood is coming, so which area will be flooded first. So all those information you can fetch from this data. So now coming to where we are implementing this NAKSHA program. So as I told, there are 157 ULBs. 157 out of these 157, two states, Jharkhand and West Bengal, they are still to start, and due to their local region, they are not able to initiate this program. So 7 ULBs we have deducted from that. So now in the 150 ULBs, this program is running. And you can see your state in this particular slide, like how many ULBs are there for in each state. We have kept maximum number of ULBs at 10 only, and in the northeastern portion, the number of ULBs are 1 maximum. So this is the status of the ULBs which are being taken for the NAKSHA pilot program. Some of the states and the union territories which are not participating in this NAKSHA program: Andaman, Nicobar, Dadra, Nagar Haveli, Delhi, Ladakh, Lakshadweep, and one state, Manipur. So now coming to the, as I told, the different stakeholders in this program. So as a department, we are implementing and planning for the NAKSHA program. And the role and responsibility of each of the stakeholders are defined, and they are taking action as per their defined role. So in the Department of Land Resources, we have finalized the cities. We have issued the SOP for implementation of the NAKSHA program. And there is one national program monitoring unit at the DOLR level. And they will be interacting with you at some point of time with regard to your ULBs. They are monitoring the implementation. And yes, we have done the capacity building. As I told, this is the last phase of the training program. We conducted the training with regard to the NAKSHA implementation program. So the next stakeholder for this implementation program is Survey of India, who were assigned the task of the aerial survey, and with the help of the third-party agencies, Survey of India conducted the aerial survey. And from aerial survey, they have extracted the features and the ORI, ortho-rectified images. And they are also ensuring the quality assurance of all those ORIs and the final feature extracted data. State and union territories, of course, they are the implementing, you are the most valuable stakeholder in this program. You have to prepare for the ground truthing, which includes the setting of the PMU, procurement of rovers, and you have to help for the, the acceptance of this program at the general public level through the IEC and capacity building program.
and definitely you will have to conduct the ground truthing. MPSCDC is our technical partner who is developing the NAKSHA portal onto which all the data, the raster data, vector data, the aerial survey data, and the textual data in form of the ownership data, which your ground truthing team will capture while going to the properties and land parcels. So all those data will be processed on those Web-GIS portal, and they will customize the Web-GIS portal as per your requirement. In most of these states, the customization is under process. In some of the southern states, they have their own Web-GIS portal. They are doing it through their Web-GIS portal, but still there is requirement to integrate their system with the NAKSHA portal through APIs. So that is also under process, under testing also. Then NIC, we have onboarded NIC for the maintenance of all those data which will be stored on cloud. So they are providing the cloud system for storage of different data sets. And the last but not the least, the Center of Excellences, COEs. We have 6 Center of Excellences which are providing the training, and they are into the capacity building activities for the surveyors, the mid-level management, and all the implementing organizations. They are providing trainings, and they will be also helping in the assessment of the implementation, creation of the documents. So I will come to the how many COEs there are there, and we have assigned the states to all the COEs for their activities. So yes, this is the information about all the COEs. LBSNA Mussoorie is one of the most active COE. Recently, Disra Gandhinagar has become one of the COEs of the DOLR, and all the states have been assigned to them, and accordingly they are supposed to assist the state in capacity building and creation of documents, assessment of the implementation, all those activities. So I will just brief you about how this NAKSHA process will go. The details of the activities will be captured in the subsequent technical sessions. Like in the 3 stages NAKSHA will cover, the map 1, map 2, and map 3. This is the just stages, and there is nothing with the map particularly per se map. So in the map 1 stage, the aerial survey data acquisition will happen, and in fact it has completed by the Survey of India. Out of around 120 ULBs, the aerial survey and data acquisition has been completed in 119 ULBs, and they will provide all the assistance with respect to the aerial data acquisition. So in the map 1 stage, in NAKSHA we have completed this portion, map 1, and now we are reaching to the map 2 stage. In most of the states, the ground truthing has been started. As you might be aware, that around 101 ULBs, they have started the ground truthing, and in some of the ULBs, I will come to that data also, in some of the ULBs, the ground truthing has also been completed. So in this stage, map 2 stage, you will have to conduct the IC activities, capacity building, and
community engagement for the better acceptance of this program. And you will have to integrate all the ownership data, which includes either the ROR data or the property registration data, registration deeds, and the property taxation data. All those data can be captured, and that can be put on the NAKSHA portal. And with those data, it is expected that your surveyors will go on the field for capturing the ground truthing and the ownership data. So this is the map 2 stage. The final map 3 stage is the publication. But before publication, you will have to invite the objection and disputes or grievances from the owners. And after settlement of all those disputes and grievances, the final publication of the ownership data will be published, which we have named it as the Urban Property Card, 𝗬PRO card. I will show you the format of the 𝗬PRO card also. So these are the main 3 stages involved in the NAKSHA program. This is the information. Survey of India will give you the detailed information about this. But how we have captured the aerial survey, these are the 3 technology we used in the aerial survey, in which the 2D nadir camera and the oblique angle camera and the oblique angle camera along with the LiDAR, these 3 technology were used in the acquisition of the aerial survey data. These are the technology. Generally, 2D nadir camera was used in the, you might be aware about the 𝗬𝗵𝗄 program, where the rural habitation was captured, and in the rural area, the 𝗬𝗵 property card was given to all the owners. So apart from that, the oblique angle camera and the LiDAR, these technologies are being first time used in the in a large scale for the resurvey program. So this is the information about how these 3 technology we have adopted in different states. All these technology basically kept in mind while these oblique camera, where the either congested area is there or the canopy is there, where the capturing of images is difficult. So those 2 technology were used in the aerial survey time. After aerial survey, when the ORI is captured, after that the feature extraction is being done. Feature extracted data, you will get the feature extracted data, 2D FE and the 3D FE data, and which will include all the information about the features of the land parcels. And with those feature extracted data, your team will go on the ground for the ground survey, and they will collate and validate the aerial survey data with the existing ground survey, ground data like ownership data, and then the final ownership can be published based on the ground truthing. So this is the different steps which includes in the ground truthing, the field survey process. This is the the activities which are required during the ground truthing. Since you all are at the mid-level management level, and at your level, it is required to keep the
monitoring process, in fact, in your mind, that the activities and the whatever required for implementation of the program is in right direction or not. So you can have this information about the ground truthing. So this is the information where we have reached now in the NAKSHA program. Aerial survey, as I told, we have completed the aerial survey portion. Almost in one ULB, in Tripura, it's going on. The flying is going on in Tripura. Ground truthing, it has been started in 101 ULBs. And in 31 ULB, it has been completed. And in 17 ULBs, it is at different stages. I will show you the stage also, so that you can just correlate with your state and your ULB. NAKSHA Web-GIS portal, it has been developed by the MPSCDC, and the customization process is going on. Capacity building component, we have trained the 160 master trainers at NIGST, Hyderabad. And apart from that, we completed the training for 330 officers of the at the level of the EOs and the district collectors and district magistrates. And again, we conducted the training for the technical persons who will be working on the NAKSHA portal. So we conducted 44 officials training at the MPSCDC, Bhopal. And as of now, the state level training, around 5,000 surveyors and the other persons, they have been trained. And apart from that, the last component, IC activities, we have prepared the SOP, which has been provided to you all. And the flyer, leaflets, and the other IEC materials we have developed centrally. You can customize as per your requirement at the state level. And if required, we will also supplement it to all these states. So this is the flying status. As I told, this is not very important. And this is the status of the implementation of the NAKSHA program, which includes all the components, like aerial survey, at which stage all the states are there, and the ground truthing, where the ground truthing has been started in how many ULBs. So you can just correlate with your state and your ULB. So this is the percentage of the ground truthing in different ULBs. In Andhra Pradesh, as you can just see, out of 10, around 3-4 ULB they have completed. So in that way, you can just see with respect to your state and ULB that where the ground truthing activity has reached now. So, yes. So now coming to the status of preparation, the preparation required for the ground truthing. So one of the vital requirement is the availability of rovers. So different states, most of the states, it's around 15 states, they have already procured. And in 10 states, this procurement of rovers is under process, still under process, and they have to expedite this portion. So as you are from the mid-level management, organizations, so you will have to monitor the progress as well as the activities in the implementation of NAKSHA program.
in the NAKSHA portal, you have the facility, the detail will be shared by the MPSCDC, but you have the facility to see how many of rovers are working in the fields. You can see it live, and where your teams are working, you can watch that also, and how much area they are covering in particular day or in ULB, how much area has been covered, how much household they are visiting. So all those data will be available on the NAKSHA portal. So this information we have just captured for your reference, that in all the states there is availability of the rover connection, and you can watch and monitor the activities in the field. One of the activity was the formation of a state level PMU, Project Monitoring Unit. So in most of the states it is formed now. Some of the states, they are still in process, like in 7 states, Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Mizoram, Nagaland, Punjab, Tripura, they are still in the process of formation of SPMU. As I told, capacity building program, we have completed the training, all the training. This information I have already shared. Now the lacking states which are required to expedite the training at the level of surveyors. Gujarat, yes, they are still to go because they are the last who joined the NAKSHA program. Punjab, Sikkim, they are the states, they have to conduct the this capacity building activity. In 8 states, the progress is still underway. This is the information about the Web-GIS end-to-end enterprise, how the entire function is, the Web-GIS portal is working. So this in detail it will be explained by the MPSCDC. This is the page of the NAKSHA portal, and how the technologies are involved in this NAKSHA program. The course, which has been established by Survey of India, and the ground truthing RTK rovers which are being used for the ground truthing. So all those equipment helping in this program that has been reflected in this slide. Yes, this is the format of the UPRO card, Urban Property Card. Urban Property Card is the final outcome of this NAKSHA program. There are different, fields of the this UPRO card, but we have given the liberty to states. Either they can amend, they can also add some of the information, they can delete some of the information, except some of the mandatory information which is required to be captured in this UPRO card. Yes, with this implementation program, we have associated this is with incentive under SASCI, through which it was envisaged that the states who are completing the pilot program, they will get the incentive amount. And for this, Government of India rolled out the 5,000 crore incentive amount. And all the states and the ULBs which are completing this program at different level of the milestone, they are eligible for the this incentive amount. And for this incentive amount, the calculation was like that. The ULBs and the cities were divided into the 4 categories. The 50,000, less than 50,000 category D cities, and more than 50,000 up to 1 lakh, 1 lakh to 2 lakh, and more than 2 lakh.
the category A. And accordingly, this incentive amount has been decided. And they have to reach up to the 3 milestones. The aerial survey, which has been completed in most of the states, they have completed this portion. Field survey, and the last map 3, that is the final publication of the repro card. For each milestone, the amount is decided. Like for the milestone 1, the city-wise amount is fixed, 5 crore, 10 crore, 15 crore, and 20 crore for the group A cities. And as per the category of cities and the milestone, you can calculate the incentive amount eligible for your state and the ULB. As of now, since first milestone has been achieved by most of the states, in fact, the state has to only facilitate the aerial survey, and all the work has been done by Survey of India and planned by the Department of Land Resources. But still, states got the amount of the milestone 1, and this time we have recommended 1,050 crores of the amount for different states. I will come to that data also with respect to your particular states. We are still receiving some of the request for this incentive amount that is under process, and by end of this month we will process all the incentive amount, and your state and ULB will get the incentive amount. Yes, this is the information about these eligibility of the incentive amount. With respect to your state, you can see the total amount which you can have in the implementation of this program. Till now, the amount which we have recommended for each of the state, you can see from this data. Yeah, these are some of the challenges and some of the activities which required to be given due attention by the state. So the preparatory activities where the things have not moved, that needs to be completed. As I mentioned, the rover procurement, SPMU formations, these activities needs to be completed as early as possible. ULB-wise planning you need to prepare, like for each of the ULB, in what time frame, how many area or how many of the household to be covered. You need to have that planning for effective implementation of this program. So as you will be monitoring this program in your ULB or in your district, you need to have a robust system of the monitoring, and for that you need to prepare one plan for early completion of the implementation, and accordingly you can achieve the amount for the incentive which has been given by the Government of India. Portal customization is under process. You have to project your requirement to MPSC-DC for the customization. And with this, the capacity building, the states who are still in progress, they can complete. UPRO card finalization, the legal status which needs to be given to UPRO card, that is still under process in some of the states, that needs to be given due weightage. Data integration with respect to the ROR and the property taxation and the registration deeds, all those data needs to be collected and brought to one portal. IC activities, these all activities are given the due weightage at your level so that the effective implementation can be ensured. Yeah, so these are the just web links of the NAKSHA program. We are publishing some of the activities. You also need to
publish your activities and tag the DOLR, whatever activities, good work is being done at your level in the ULBs or at the state level. So you can tag DOLR and the Government of India. So these are just some glimpse of the training programs. So thanks for your attention, and if any questions from your side, if you could ask, I am available for that. So Thank you. Thank you. So if there is no question, then with this, I'll end this first session of the technical Thank you, sir. Thank you. I would like to invite and request, sir, please take a stage, sir. 𝗦𝗵𝗿𝗏𝗺, IAS, Assistant Collector, Bharuch, welcome and felicitate Honorable Shyam Kumar, sir, with the memento. तालियों की गूंज के साथ स्वागत करते हैं। थैंक यू सर, वंस अगेन थैंक यू। सभी मॉडरेटर और सभी स्पीकर से सादर अनुरोध है, आपको जो मिनट टू मिनट दिया है, ड्यूरेशन दिया है, उस हिसाब से आप प्रस्तुत होइए। प्लीज वेलकम श्री 𝗕𝗏𝗄𝗏 IAS, असिस्टेंट कलेक्टर बनासकांठा पालरपुर। नेक्स्ट सेशन स्टार्ट। Respected seniors and colleagues, it is my pleasure to introduce Shri Shailesh Kumar Sinha sir, who is BTech in Civil Engineering from IIT BHU. He is an Indian Engineering Service officer of 91 batch. He was involved in major projects such as Delhi State Spatial Data Infrastructure, Integrated Coastal Zone Management, National Hydrology Project, National Mission for Clean Ganga, 𝗏𝗏𝗄𝗏 projects. He has also served as head of the National Institute of Geoinformatics Science and Technology. Currently, he is the Additional Surveyor General and is looking after all the technical activities of Survey of India. Sir, please welcome. Namaskar and good morning to all. I'll try to stick, I think my time is 12:05. I'll try to finish questions and 5 minutes I would like to keep for any questions, if at all, from anyone. Next slide, please. So basically, I think lots have been talked about it, NAKSHA, how it is under DILRMP. And it is a collaborative effort of DOLR, Survey of India, state governments, union territory governments, MPSCTC, NIC, and most importantly, the private industry. Because the kind of scaling up that we are aiming at, this will not be possible without the implementation by the private industry on the ground. And even in the pilot stage, they have played a very important role. Next one, please. तो पहले एक परिप्रेक्ष्य, एक ब्रॉडर मैं देना चाहता हूँ, मतलब जो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जो है. सो आई वुड लाइक टू से अबाउट द नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी 2022. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही एक रिवोल्यूशनरी एक पॉलिसी लाई है 2022 में. इसमें पूरे जियोस्पेशियल इकोसिस्टम को उन्होंने एक तरह से इंटीग्रेट कर दिया है. अभी तक जितने भी डिपार्टमेंट्स थे, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स थे, सभी आइसोलेशन में काम कर रहे थे. तो क्या था कि लैंड रिकॉर्ड्स, जो अगर स्टेट गवर्नमेंट लैंड रिकॉर्ड बना रही है, अगर मॉर्थ है या NHAI के पास रोड का अगर है, तो दोनों में तालमेल नहीं था, सामंजस्य नहीं था. और उसके लिए क्या था कि इवन द सर्वे एंड मैपिंग दैट वाज कंसिडर्ड टू बी rather it was very restricted. अगर किसी ने कर लिया तो वो एक क्राइम भी था.
अगर वो डेटा रख लिया, अगर प्रोसेस कर लिया, तो इट वाज अ काइंड ऑफ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन 2021 द जियोस्पेशियल गाइडलाइंस वाज इंट्रोड्यूस्ड व्हिच लिबरलाइज्ड एवरीथिंग. The fact that we are talking about NAKSHA, we are doing NAKSHA, the private industry is involved, you will be able to share the outputs of this NAKSHA amongst yourself. It is because of the geospatial guidelines and the National Geospatial Policy 2022. Every Indian entity, I would like to, because if you are not aware, आज की डेट में किसी भी एक्यूरेसी की सर्वे हर इंडियन एंटिटी कर सकता है. चाहे पहले ये लिमिटेड था कि सर्वे ऑफ इंडिया के लोग ही कर सकते हैं और बाकी लोग नहीं कर सकते हैं, अब ऐसा नहीं है. एंड इफ यू लुक, देर आर 14 फंडामेंटल, दिस स्लाइड शोज 14 फंडामेंटल थीम्स. सो लैंड पार्सल्स इज वन ऑफ देम. वी आर एमिंग एट लैंड पार्सल इन द नक्शा. And all the others, whether it is water, transport, buildings and settlements, या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड कवर, ये सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ऑल दीज डेटा आर रिक्वायर्ड. एंड ये यूएन, यूनाइटेड नेशंस ने ये दिस हैज़ अडॉप्टेड, और हमने अपने पॉलिसी में भी इसको अडॉप्ट किया है. और आपको लगेगा कि जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में है, जैसे जो एड्रेस का जो थीम है, तो एड्रेस में बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव मैं कह रहा हूँ कि जैसे नक्शा एक बहुत बढ़िया एक इनिशिएटिव ली जा रही है. डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और NRSC, सर्वे ऑफ इंडिया, सभी मिलकर के एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव लेकर के आ रहे हैं ये डिजिटल एड्रेस की, कि जिस तरह एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आधार से बना, उसी तरह एड्रेस का एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके कंसेंट से, जैसे आप कितने काम कर सकते हैं आधार के हेल्प से, उसी तरह से आप ये एड्रेस के हेल्प से आप बहुत सारे ट्रांजैक्शंस ये आप कर सकेंगे कंसेंट बेस्ड कुछ दिनों के बाद. तो ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के साथ हमें अब देखना है कि जो हम अथॉरिटेटिव डेटा दैट वी आर क्रिएटिंग इन द नक्शा, दे आर गोइंग इनटू द बिल्डिंग ऑफ अ जियोस्पेशियल इकोसिस्टम इन द कंट्री. नेक्स्ट वन प्लीज. This I will skip this slide because Shyamji has talked in detail about the responsibilities of everyone. लेकिन उसमें एक चीज़ था कि the selection of the right जो टेक्नोलॉजी है वो सर्वे ऑफ इंडिया had to select. तो नेक्स्ट वन प्लीज. तो आप देखिए कि सबसे पहले प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना एक सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जियोस्पेशियल डोमेन से नहीं हैं, जो हैं भी तो बहुत सारे उन्होंने ग्राउंड पर उनका काफ़ी मतलब स्ट्रेस रहा है आज तक. तो आप देखिए कि जैसे आप नीचे से ऊपर जाते हैं, जैसे सबसे नीचे आप ग्राउंड पे रहते हैं, तो आप एक्यूरेसी तो अचीव करते हैं, लेकिन आपकी कवरेज आउटटर्न ये काफ़ी कम रहती है. थोड़ा सा ऊपर आप जाते हैं, करीब 120 मीटर अगर आप जाते हैं ड्रोन से, तो कवरेज मिलती है, आउटटर्न भी बढ़ जाती है. एयरक्राफ्ट के पास जाते हैं, एक्यूरेसी लगभग मैच करते हैं आप, लेकिन एरिया जैसे एक दिन में आप करीब 100 से 200 स्क्वायर किलोमीटर आराम से फ्लाइंग कर लेंगे, जबकि ड्रोन से आप 3 से 5 स्क्वायर किलोमीटर कर सकते हैं. और अगर आप टेरेस्ट्रियल अगर एक टोटल स्टेशन लेकर के आप करते हैं तो एक महीने में आप 1 से 3 कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे. और आप सैटेलाइट पे जाते हैं तो आप बहुत 1000 स्क्वायर किलोमीटर भी आपको कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी डिग्रेड करते जाती है. तो ये दोनों का बैलेंस है. कल को टेक्नोलॉजी हो सकता है सैटेलाइट की ऐसी आ जाए कि आपको ये इन सब टेक्नोलॉजीज़ को खत्म कर दे, मतलब इतनी इम्प्रूवमेंट अगर हो जाए. तो हमें ये चीज़ को है फ्यूचर रेडी रहते हुए हमें करना है. और जो हम एक बेस बना करके चल रहे हैं, इफ़ वी आर से क्रिएटिंग, ये जो पहला जो हम नक्शा में हमने जो एक बेस लेयर बना दिया है, फ्यूचर की अपडेशन के लिए सैटेलाइट इमेजरी भी हमारी काम आ सकती है. तो अपडेशन के लिए टेक्नोलॉजी अलग रह सकती है और बेस लेयर क्रिएट करने की टेक्नोलॉजी अलग रह सकती है. नेक्स्ट. ये हाई रिजोल्यूशन का क्या काम है, जस्ट एक सैंपल मैंने दिया है. एक ही लगभग एक ही स्केल पर है सभी, और ये सभी एक ही एरिया पे सर्वे ऑफ इंडिया ने अलग अलग समय पे सर्वे किया था. अब देखिए, जब 2.38 मीटर्स रिजोल्यूशन की इमेजरी है तो कुछ दिखता ही नहीं है.
जैसे ये बहुत बार आती है ना कि भाई सैटेलाइट इमेजरी यूज़ करूं कि ड्रोन इमेजरी यूज़ करूं, इसमें आपको कुछ नहीं दिख रहा है, इसका ब्रॉडर, हाँ बैक जाओ, 80 सेंटीमीटर्स में आप जाते हैं तो भी आपको ज़्यादा नहीं दिखता है। इससे आप 10,000 स्केल की मैप नक्शे तक बना सकते हैं। वो है आपकी, आप ICZM प्रोजेक्ट में हमने किया था, तो ये करीब 10 सेंटीमीटर रिजोल्यूशन की इमेजरी थी। यहाँ बिल्कुल क्लैरिटी है, अच्छी क्लैरिटी है, लेकिन नक्शा में जो हम यूज़ कर रहे हैं, नक्शा में और ज़्यादा क्लैरिटी है जब हम ड्रोन यूज़ कर रहे हैं। ये कुछ सालों पहले ड्रोन टेक्नोलॉजी पे लोगों का विश्वास नहीं था, एंड इवन आई वॉज वन ऑफ द पर्सन्स जो कि आई नेवर बिलीव्ड कि ड्रोन टेक्नोलॉजी विल बी competing or will be even better than in some cases than the aerial imagery, क्योंकि एरियल जब एयरक्राफ्ट में आप जाते हैं तो कैमरा 1-1 करोड़ का कैमरा लगता है उसमें, और यहाँ सोनी का जो है 20 to 40 मेगापिक्सल का कैमरा लगता है, फिर भी टेक्नोलॉजी उसकी प्रोसेसिंग ऐसी रहती है कि आप वो एक्यूरेसी अचीव करते हैं। एंड ये पहली बार नक्शा में, नेक्स्ट जाओ एक मिनट, पहली बार नक्शा में ऐसा हुआ है कि हमने स्टैटिस्टिकली, जैसे जितनी भी 119 में ऑलरेडी फ्लाई किया है, 119 में 30 चेक पॉइंट्स हमने दिए हैं। ये कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर तक में का अगर प्रोजेक्ट है तो आपको मिनिमम 30 चेक पॉइंट्स देने हैं। हमारे 50 स्क्वायर किलोमीटर भी थे, 100, फिर भी हमने 30 दिया, और हमने RMSE 5 सेंटीमीटर के अंदर आई। तो ये सबके मन में एक चीज़ आ जाए कि जो एक्यूरेसी जो आप अचीव करेंगे, जो आपको जो बेस डेटा मिल रहा है वो 5 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी का है। और संशय बिल्कुल मत रखिए, बिल्कुल डाउट नहीं रहना चाहिए कि ग्राउंड मेथड से, टोटल स्टेशन से, ये किसी तरह से जो चीज़ आपको दिख रही है, जो नहीं दिख रही है उसकी मैं नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो दिख रही है उसकी ज्योमेट्रिक एक्यूरेसी इस लेवल की अचीव की जा चुकी है। ये जो सेंसर्स हमने यूज़ किए थे वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जो नादिर सेंसर है हमने समित में यूज़ किए थे, लेकिन नक्शा में हमने किया है क्रॉस ग्रिड फ्लाइंग की है, मतलब ऐसे भी फ्लाई की है और क्रॉस ग्रिड में की है, क्योंकि यहाँ बहुत टॉल स्ट्रक्चर्स रहते हैं, तो जो हाइट के कारण कुछ भी डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट, और जो टेक्नोलॉजीज़ जो हमने यूज़ की हैं इस पे भी सबसे पहले नेटवर्क RTK, जो CORS सबसे, इस पर मैं ज़रूर ये बोलना चाहूँगा, पूरे देश में करीब 50 से 60 किलोमीटर दूरी पे हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है जिसका नाम है कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन। ये सभी एक नेटवर्क में है, और ये नेटवर्क हमारे देहरादून के कंट्रोल सेंटर से कनेक्टेड है। इनसे क्या होता है कि पूरे कंट्री की एरर मॉडलिंग की जाती है, क्योंकि GPS से, आप जैसे मोबाइल में भी GPS है, लेकिन इसकी एरर 10 मीटर 12 मीटर ऐसे रहेगी, लेकिन इनके हेल्प से पूरे कंट्री में एक तरह से आप समझिए कि एक एरर मॉडलिंग रहती है, और आपके इंस्ट्रूमेंट में जो आप नक्शा में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि 5 सेंटीमीटर से कम रियल टाइम करेक्शंस आपको कोऑर्डिनेट्स जो है एक्यूरेसी मिलती है। तो अब क्या है कि हमने ड्रोन में भी 5 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी अचीव कर ली, और जब आप ग्राउंड पे CORS लेके जाते हैं तो भी 5 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी मिलती है। तो दोनों जो प्रोसेस है कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। जो चीज़ें आपको एरियल सर्वे से जो छिप गई, जो ऑक्लूडेड थी, जो हिडन थी, जो नहीं, क्योंकि एंगल से है ना, हर चीज़ तो दिख नहीं पाता है, वो आप जा कर के, अब आप अगर कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग जो GPS रोवर जो कि कनेक्टेड है मेरे CORS नेटवर्क से, आपको 5 सेंटीमीटर की उन हिडन उसकी मिल जाएगी, और दोनों एक दूसरे में जेल करेंगे। लास्ट में मैं कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा, 4-5 स्लाइड्स जो हमने ग्राउंड पे जा कर के एक्चुअल अपने मेश मॉडल और ORI पे जो CORS का जो वी हैव टेकन द ऑब्जर्वेशन, वी हैव प्लॉटेड, एंड विल शो हाउ कंसिस्टेंट दे आर। जियोइड मॉडलिंग, ये भी मैं एक बार जरूर कहने लगा, ऑल 120, दिस इज़ द मोस्ट अंडरस्टेटेड पार्ट, क्योंकि जो GPS हाइट, एक चीज़ मैं बता दूं, वाटर फ्लो क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करती है।
GNSS XY के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन उससे आप Z, अगर पानी का कोई भी प्रोजेक्ट आप ले रहे हैं तो आप GPS हाइट से नहीं काम कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर जब मैं काम कर रहा था 2010-11 की बात में, 53 मीटर का डिफरेंस है, जो एलिप्सॉइडल हाइट जो कि GPS हाइट देती है और MSL हाइट जो है 211-12 की उसी जगह की थी। तो पूरे, और ये वेरी करता है कंट्री में, ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। तो हमने ग्रेविटी मेजरमेंट्स, लेवलिंग और इन सब के हेल्प से इन सभी टाउन्स के लिए जियोइड मॉडल बनाया है। और जो हाइट तो है, क्योंकि ड्रोन पे भी तो GPS लगा हुआ है, तो ड्रोन से तो GPS हाइट मिला, उस पर हम ये जियोइड मॉडल लगा करके जो डिलीवरेबल देंगे वो मीन सी लेवल हाइट्स देंगे। तो आप उसको अर्बन फ्लडिंग और इन सभी चीज़ों में, जैसा कि श्याम जी बता रहे थे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हर जगह आप इनका इस्तेमाल कर पाएंगे। और इनके बारे में तो फोटोग्रामेट्री, ड्रोन फोटोग्रामेट्री और लाइडार डिटेक्शन ये सब है ही है, और डिजिटल मैपिंग एंड 2D जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन 3D जो है वो आप जितना, क्योंकि फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि इन सभी थीम्स, जो 14 थीम्स मैंने उधर बताया था, सबको कंबाइन करके आप अपने ULB के लिए, अपने स्टेट के लिए बहुत पावरफुल GIS बना सकते हैं। नेक्स्ट, ये जस्ट एक सैम्पल सबका रखा है, ये हमारे की डिलीवरेबल्स हैं। तो बहुतों के लिए है क्या है, एक एक करके, हाँ, ये जस्ट ORI, ऑर्थो रेक्टिफाइड इमेजरी। बैक आ जाओ। डिजिटल सरफेस मॉडल एंड डिजिटल, ये एक कॉमन कन्फ्यूजन रहता है कि व्हाट इज़ अ डिजिटल सरफेस मॉडल, व्हाट इज़ अ डिजिटल टेरेन मॉडल। डिजिटल सरफेस मॉडल ये है, उसमें बिल्डिंग्स की अपनी हाइट है, वेजिटेशन है। डिजिटल टेरेन मॉडल मतलब ग्राउंड, आप बिल्डिंग को हटा दीजिए, आप पूरे वेजिटेशन को हटा दीजिए, फिर जो बच गया वो हो गया डिजिटल टेरेन मॉडल। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट हम यहाँ पर प्रोसेस करके और ये करके यहाँ दोनों यहाँ पर दे रहे हैं, जो कि आपको अर्बन फ्लडिंग ये सब में भी काम आएगा। नेक्स्ट, कंपोजिट पार्सल लेयर जो है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है, नक्शा प्रोजेक्ट है, तो इसमें आपको एक पूरा लेयर चाहिए पार्सल का, उसमें ओनरशिप सबकी रहेगी, कोई गैप नहीं है किसी के बीच में। और ये लेयर जो है, ये एक जूम छोटे स्केल पर आपको दिखाया हुआ है, ऐसे ही आप बड़े स्केल पर बाजू में दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत क्लियरली एक एज टू एज बहुत एक्यूरेटली ये डिजिटाइज किया हुआ है। नेक्स्ट, और 3D मैश मॉडल, वीडियो देखो चल रहा है, चल जाएगा यहाँ पे वीडियो, यहाँ नहीं चल रहा है 3D मैश मॉडल, वीडियो नहीं है, कोई बात नहीं। ये 3D है एक्चुअली, एक वीडियो बनाया था, यहाँ पर शायद किसी टेक्निकल उसके कारण यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। बैक चले जाओ, हाँ चल रहा है, हाँ ये ठीक है। हाँ, क्वालिटी इसके अंदर तो थोड़ी सी वो लग रही है, लेकिन आप एक्चुअल डेटा देखेंगे तो बहुत ही अच्छी, ये ऑब्लिक कैमरा से, ऑब्लिक कैमरा के कारण आप सब फैकेट उसका देख पा रहे हैं। और ये है, अब ये जब 3D मैश मॉडल है, इनिशियली अभी आपको हो सकता है कि लैंड रिकॉर्ड्स के लिए उतनी ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन अर्बन एरियाज़ में ये एनविसेज किया गया है कि आपके बहुत मल्टी स्टोरीड है, तो सबकी अगर यूनिट वाइज अगर आप सबकी ओनरशिप करेंगे तो पॉसिबल है। और टैक्सेशन जो है, फ्लोर एरिया कितना होगा आप रफली एस्टिमेट करेंगे और आप कर सकते हैं कि मुझे टैक्सेशन पूरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। नेक्स्ट, ये ठीक है, 2D डेटा सेट है, ये डिजिटाइज होकर के यही आप फील्ड में लेकर के जाते हैं और प्रॉपर्टी को सर्वे करते हैं, ग्राउंड सर्वे मिसिंग पॉइंट्स के लिए। नेक्स्ट प्लीज। ORI क्या है? ORI सब बहुत इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड है, आप खास करके ये जो नक्शा प्रोग्राम के लिए या लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन के लिए, क्योंकि ये एक डिस्टॉर्शन रिड्यूस करता है। अब आप देखिए कि दोनों एक ही चीज़ की है, ये हमारे ये दोनों एक ही ये है, एक वो है नॉर्मल इमेजरी और ये है ऑर्थो रेक्टिफाइड इमेजरी। उस इमेजरी में आप देखिए कि दो बिल्डिंग है, जैसे ये वाली ये बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का ये भी दिखता है, मतलब बिल्डिंग का बॉटम और बिल्डिंग का टॉप वो अलग अलग जगह पे हो रहे हैं।
क्योंकि फोटोग्राफ की ज्योमेट्री ऐसी रहती है ना, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ऑर्थो में हम यही करते हैं कि उसी चीज़ को हम एकदम ऑर्थोगोनली मैथमेटिकली एक उसमें इंटरनल इसका ये रहता है और आपको बिल्कुल टॉप बॉटम छिप जाएगा और ये जो कोऑर्डिनेट आ रही है जो टॉप की वो एकदम बिल्कुल सही आ रही है। तो ये है। अब वो देखिए वो जो है ना एक पाइलन जैसा था, वहाँ पर वैसा दिख रहा है, टॉप अलग दिख रहा है, बॉटम अलग दिख रहा है, यहाँ पर एकदम ऐसा दिख रहा है। तो ORI जो है पहले ये पॉसिबल नहीं था जब एनालॉग एज में थे, तो ऑर्थो रेक्टिफाइड इमेजरी डिजिटली आप नहीं बना सकते थे। लेकिन अब क्या है, डिजिटल फोटोग्रामेट्री है, दिस इज़ अ डिजिटल प्रोडक्ट और ये अब आपका सबसे बेस लेयर यही हो गया। तो जितने भी लोग आज आपने जितने लैंड पार्सल्स निकाल लिए, लेकिन कल को आपके स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी डिपार्टमेंट अगर अपने लेयर्स निकालना चाहेगी तो इसी ऑर्थो फोटो से भी निकाल सकती है और सब एक दूसरे से X, Y, Z तीनों में सामंजस्य में रहेंगे, दे विल बी इन कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट वन। और ये आपके पुराने रिकॉर्ड्स को भी आप देखिए, ये एक पुराना रिकॉर्ड है। दिस इज़ अ विलेज टेकलापाडू इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। और उसमें पुराने रिकॉर्ड्स को आपने जो कुछ एंकर पॉइंट्स, कंट्रोल पॉइंट्स के हेल्प से आपने मैच करा दिए, तो पार्सल नंबर्स आपने कोरिलेट कर लिया। स्मॉल वेरिएशंस इन ज्योमेट्री विल बी देयर एंड देन इट विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ सब डिवाइडिंग दिस एंड गेटिंग योर एक्चुअल थिंग्स। नेक्स्ट वन। हाँ, ये स्टेजेस हैं। आई डोंट नो वेदर यू आर, पहला स्टेज है, बैक जाओ एक मिनट। हाँ, पहला स्टेज है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, इतने एक्टिविटीज़ हैं। जस्ट फोटो दिखा दो। मेजर जो हम ये कह रहे हैं प्री फील्ड में है, पहला चीज़ क्या है कि हमारे उस जोन्स में हमें परमिशंस मिले हैं कि नहीं, रेड, येलो, ग्रीन जोन, ये बहुत बड़ी एक्टिविटी रहती है, वो हम करते हैं। बैक जाओ। फिर प्रोविज़न ऑफ GCPs। देखिए हमारे जो एरिया में हम 5 GCP, जैसे इस मेरी एरिया ऑफ फ्लाइंग है, तो ये मिशन प्लानिंग जब हमने किया है तो इन जगहों पे एक्सपोजर होगा। उसी समय जितनी ओवरलैप हम प्लान करते हैं उसी हिसाब से यहाँ पर एक्सपोजर होता है, कैमरा उसी समय फ़ोटो लेता है। एंड ये 5 कंट्रोल पॉइंट्स विल इंश्योर कि यू आर इन द जियोडेटिक रेफरेंस फ्रेम। थोड़ी मोड़ी अगर इधर डेविएशन भी अगर हो गया, GPS का सिग्नल भी ख़राब हुआ, ट्रेजेक्ट्री इधर उधर चली गई, फिर भी ये कंट्रोल पॉइंट्स विल एंकर यू टू द नेशनल जियोडेटिक रेफरेंस फ्रेम। नेक्स्ट, चेक पॉइंट्स आप देखिए, 30 चेक पॉइंट्स, हाउ वी हैव स्प्रेड इट, दिस वी हैव डन इट फॉर ऑल द ULBs। बैक जाइए। और मिशन प्लानिंग, ये जब हम मिशन प्लानिंग करते हैं तो उस समय जो पाथ, जो आप एरिया जो डिसाइड करते हैं, तो हम बिल्कुल उसकी ट्रेजेक्टरी हम डिसाइड कर लेते हैं कि इसी तरह से वो जाएगी। और ये मिशन प्लानिंग जो होती है 3D में Z के हाइट के साथ, उसी हाइट पे, उसी XY, उसी पाथ पर जाएगी, ताकि हमारी उस टाइप की ओवरलैप और कोई भी हमारा गैप नहीं रहे। नेक्स्ट वन। तो लास्ट में एक जस्ट इसको ये कह रहा है, बेसिकली दिस इज़ द ड्रोन फ्लाइंग। जब ऑपरेशन हो रहा है, एक ग्राउंड स्टेशन होता है जहाँ पर कंट्रोलर के साथ एक ड्रोन ऑपरेटर रहता है, वो कनेक्टेड रहता है डेटा, मतलब ड्रोन से। सो एक डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है वाईफाई से या रेडियो फ्रिक्वेंसी, रेडियो से भी रह सकता है, फ्रिक्वेंसी से वो कनेक्टेड रहता है। ड्रोन पे कैमरा फिटेड रहता है, कैमरा में GPS है जो कि सैटेलाइट से सिग्नल्स ले रहा है, और जो आपने जो ट्रेजेक्टरी जो प्लान किया है इस ड्रोन में अपलोडेड रहता है, और उस GPS से मैच करके एग्जैक्टली उसी ट्रेजेक्टरी पे ये चलता है। और ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स, इस तरह के टारगेट्स हम ग्राउंड पे मार्क करते हैं, जाकि ये फोटोग्राफ भी हो जाए और इनके हेल्प से हम पूरी करेक्शन अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट, ये अलग अलग स्टेजेस हैं, मतलब इसको मैं स्किप करूंगा, आई थिंक यू विल नॉट बी मच इंटरेस्टेड इन दैट। हाँ, और जो मैप 1 जो हमारा क्रिएट हो रहा है, जितने भी मैप 1 से मैप 2 हम कैसे जाते हैं, तो मैप 1 जैसे ही हमारा क्रिएट होता है, वी आर अपलोडिंग इट ऑन दी MPSCDC पोर्टल एंड स्टेट गवर्नमेंट, आपका इंटरफेस MPSCDC पोर्टल बन जाता है। और उसके बाद उस मैप 1 डेटा में जो भी आपके करेक्शंस या करेक्टेड डेटा जो रहते हैं, वो फिर आपका मैप 2 बनता है। ग्राउंड ट्रूथिंग के बाद वो मैप 2 बनता है। नेक्स्ट,
आप ये जान करके देखिए कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री टेक्नोलॉजीज़ हैं। एरियल सर्वे इज़ कॉम्प्लीमेंटेड बाय GNSS एंड टोटल स्टेशन। GNSS की अपनी लिमिटेशन है, आप बहुत टॉल बिल्डिंग के पास जाएंगे, पेड़ के नीचे जाएंगे, कोई बहुत हाई टेंशन पावर लाइन है तो वहाँ GPS सिग्नल्स ख़राब हो जाते हैं। नैरो अगर कोई ये है, बहुत नैरो स्ट्रीट है, मतलब जितनी स्ट्रीट की विड्थ है उससे से 5 टाइम्स कोई बिल्डिंग है तो वहाँ आपको अच्छे GNSS से नहीं आएंगे। वहाँ पर आपको समझना है कि मैं अल्टरनेटिवली टेप टोटल स्टेशन यूज़ कर लूँ, टेप से भी कुछ मेजर कर लूँ, क्योंकि वहाँ GNSS नहीं आने वाला है ना। और तो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री टेक्नोलॉजीज एंड दे प्रोवाइड सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स ओवर अगर कोई बोलता है कि मैं केवल टोटल स्टेशन से करूँगा। इससे हाइपर क्लिक करना बेनिफिट्स को, ये एक जस्ट कंपैरिजन दिया है क्योंकि ज़्यादातर लोग बेनिफिट्स को, हाँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग टोटल स्टेशन से वाकिफ़ हैं। तो एरिया कवरेज आप देखिए 3 to 5 स्क्वायर किलोमीटर्स पर डे, वहाँ 1 to 3 स्क्वायर किलोमीटर पर मंथ, तो एरिया कवरेज बहुत ज़्यादा है। डेटा कैप्चर ऑब्जेक्टिव है, आप फोटो में हर चीज़ कैप्चर कर रहे हैं, जबकि टोटल स्टेशन से आप सेलेक्टिव पॉइंट बेस्ड कैप्चर है, मुझे वो पॉइंट है तो बस वही पॉइंट करूँगा, तो आप कंप्रिहेंसिव मैप कभी नहीं बना पा रहे हैं। आपके आउटपुट प्रोडक्ट्स, आप इतने सारे आउटपुट प्रोडक्ट्स, ऑर्थो इमेज, DSM, DTM, पॉइंट क्लाउड, 3D मॉडल, कम पैसे में कम टाइम में आप जनरेट कर रहे हैं, उधर आप कुछ कोऑर्डिनेट्स ही केवल ले पा रहे हैं। आपके पास एक्सेस रिक्वायरमेंट, अगर टोटल स्टेशन है तो आपको उसके घर में जाना है और जा कर के करना है। ड्रोन से आप बहुत सारी चीज़ें हवाई में ही आप कैप्चर कर ले सकते हैं। सूटेबिलिटी इन डेंस एनवायरनमेंट, नैरो लेंस में अगर आप टोटल स्टेशन से ऐसे जाएंगे यू विल गेट लॉस्ट, ड्रोन से आप फिर भी कैप्चर कर लेंगे। इट इज़ रीयूजेबल, ऑपरेटर स्किल आपको टोटल स्टेशन में ज़्यादा चाहिए, लेकिन लीगल बाउंड्री अगर कहीं पर है, जहाँ पे बहुत है, देन मे बी आपको टोटल स्टेशन की मदद लेनी पड़ेगी और इससे सपोर्ट लेनी पड़ेगी। और इंटीग्रेशन विद GIS, फ्यूचर GIS आप कर रहे हैं, इसका ऑटोमेटिक हो जाता है, जबकि टोटल स्टेशन में आपका इट रिक्वायर्स डिजिटाइजेशन। बैक आ जाओ, हाँ। और 85 to 90% आपको जो प्रॉपर्टी मार्कर्स हैं या प्रॉपर्टी बाउंड्री, यू विल बी एबल टू कैप्चर विद द ड्रोन्स। अराउंड 10 to 15% you will have to do it on the ground, but you will have to verify the property you will have to, you need not measure it। आप जाते हैं तो आप ज़रूर देख लीजिए, हाँ ये जा रही है, यही वॉल है, यही बाउंड्री है, मैं कंफर्म हो गया। मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। मेजरमेंट जो छिपी हुई चीज़ें हैं उनके लिए आपको मेजरमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक। एंड की आउटकम्स ऑफ नक्शा, आई थिंक श्याम जी ने भी काफ़ी डिटेल में बताया है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, बेटर लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, geospatial foundation, accurate maps for planning, development, decision support system of the urban local bodies, efficient urban planning including infrastructure planning, disaster risk reduction and better disaster management, better public service delivery। ये सर्विस डिलीवरी में बहुत बड़ा इसका रोल रहेगा, जो लोकेशन बेस्ड सर्विसेज जो आएंगे उसमें आपकी बहुत ज़्यादा इसका रोल है। एंड इम्प्रूव्ड प्रॉपर्टी टैक्सेशन। नेक्स्ट, ये थैंक यू है। एक वो डॉक्यूमेंट एक कर दो, वो वाला जो PDF वाला है, वो एक रियल केस, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी स्टेट से कि CORS किस एनवायरनमेंट पे कैसे काम कर रहा है, इसलिए हमने टीम भेज करके उसको एनालाइज किया है। तो PDF डॉक्यूमेंट है जो रत्नेश, हाँ खोल दो उसको। हाँ डाउन, हाँ ये बेसिकली क्या शो कर रहा है कि उस बिल्डिंग के उस कॉर्नर पे हमने किया था। अब आप देखिए कि एक तरफ पूरा खुला हुआ है, वो एक फ़ोटो एक बड़े से हमने देखा है, और वो आदमी जो है साइड पे फ़ोटो ली गई है, देखिए वो उस कॉर्नर पे खड़ा है ना। और जो उसको कोऑर्डिनेट मिली है, अब मेश मॉडल पे प्लॉट किया है तो बिल्कुल शार्प वहीं पे आ रहा है।
तो इसका मतलब बिल्कुल कंसिस्टेंट है, व्हाट हैज़ बीन डन एंड व्हाट जो यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट, और ये यहाँ पर आप देखिए, ये जो स्काई प्लॉट होता है, मतलब बेसिकली क्या होता है, स्काई प्लॉट में वो सैटेलाइट, आपको कितने सैटेलाइट, मिनिमम आपके पास 7 से 8 सैटेलाइट आपको रहने चाहिए। जो सैटेलाइट्स आपके काम में आ रहे हैं वो ब्लू में, इसमें फिगर में हमारे पास बहुत रोवर्स में इंडिकेट करने का रहता है, तो ब्लू वाले जो सैटेलाइट्स हैं वो हमारे पास सिग्नल आ रहे हैं, बाकी अवेलेबल हैं लेकिन किसी ऑब्स्ट्रक्शन से छिप रहे हैं। तो उस समय जहाँ पर आप जाते हैं तो एक पीडॉप वैल्यू भी रहती है, वो पीडॉप वैल्यू 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 से ज़्यादा होगा तो सिग्नल डिग्रेड, मतलब सैटेलाइट की ज्योमेट्री ठीक नहीं है, तो आपकी एक्यूरेसी इधर उधर हो सकती है। और जब आप बहुत डीप कैनियन में, अर्बन कैनियन में अगर जाते हैं कि इधर बिल्डिंग है, इधर भी बिल्डिंग है और मैं बीच में हूँ, रोड पतली है, तो उस समय अगर आपके पास सिग्नल आ भी जाए तो मल्टीपाथ, वो सीधी रे नहीं आ रही है, वो टकरा के आ रही है, वहाँ भी आपकी वो गड़बड़ हो सकती है एक्यूरेसी। तो ये आपको रफली आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हाँ, ये तो बिल्कुल ओपन एरिया है तो यहाँ पर अच्छा ही आया। नेक्स्ट जाइए, यहाँ देखिए, वो देखिए एक चीज़ रहता है उसमें आता है सॉल्यूशन टाइप। तो जनरली जिस रोवर्स में हम रहते हैं तो 3 तरह के सॉल्यूशंस हैं, एक फिक्स्ड सॉल्यूशन, एक है डिफरेंशियल, तीसरा है फ्लोट। फिक्स्ड अगर आप ला रहे हैं तब आप 5 सेंटीमीटर उस एक्यूरेसी के रेंज में रहेंगे। जहाँ डिफरेंशियल हो गया तो हो सकता है 40 सेंटीमीटर तक भी आप आउट हो सकते हैं। और फ्लोट है तब आप तो बिल्कुल नहीं भरोसा कर सकते हैं। फ्लोट सोल्यूशन को आप अगर मिल गया तो आपको समझना है कि यहाँ GNSS से काम नहीं बनेगा। ठीक है ना, बस दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, son. Please stay on the dais. I would like to invite Sri 𝗍𝗶𝗃𝗏𝗏𝗺 IAS for the felicitation with the floral bouquet and memento. आप सभी से